Hello everyone, a very good evening to all of you. Good evening my dear friends. I hope I'm clearly visible and audible. Alright, great. Yes, we are live here. Sorry friends, sorry for a small delay. हमने 2 मिनट लेट स्टार्ट किया आज का सेशन. That is a rare instance, but that is just because of some technical error. And here we are live once again in this series for all the smart students who are attending this smart prep for IPMAT 2026. So friends, please quickly tell me if I'm clearly visible and audible to all of you. जल्दी से एक बार बच्चा लोगों क्लास में यहाँ पे चैट बॉक्स में जल्दी से एक बार मेंशन कर दो इफ आई एम क्लियरली विजिबल एंड ऑडिबल सो दैट वी कैन क्विकली स्टार्ट ऑफ विद दिस सेशन as requested by all of you in the previous series कि भाई सर लॉजिकल रीजनिंग बहुत हो चुका है, थोड़े से डेटा इंटरप्रिटेशन के भी क्वेश्चंस लेके आइए, डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लासेस कंडक्ट कीजिए. सो हियर आई एम with the class of data interpretation for all of you. All right, so good evening everyone. All right, so visible and audible, perfect. So हम ये वाला लेक्चर आज का स्टार्ट कर सकते हैं. Okay, so I'll start with one very simple question. How many of you are on a right path, right direction for the preparation of IPMAT? किस किस की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, जल्दी से बताओ. Come on. Just tell me something about your preparation. कैसा चल रहा है? Which are the areas, which are the topics or which are the subjects in which you are suffering? और कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एकदम कंट्रोल में है? नहीं चल रही सर. शुभम started 1 week ago. So शुभम बेटा देख थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है, बट अब देखो सिंस यू ऑलरेडी नो कि हमारा जो बिगिनिंग है वो लेट हो चुका है. सो अब आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी आगे स्टडीज कर रहे हो, जितना भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए. ठीक है. प्रिपरेशन इज गुड, नॉट फीलिंग गुड इन क्यूए. संकेत देखो, यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स. हाँ, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा क्यूए ही वीक होगा. So determine the areas, determine the topics, determine the concepts जहां पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है. So अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आ रही है, बट अर्थमेटिक भी बहुत वास्ट है. अलजेब्रा में प्रॉब्लम आ रही है. So कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, एक एक करके वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना शुरू करो. ठीक है. अगर तुम मुझे बोलोगे कि सर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, शुरुआत करते हैं. ठीक है. सो अर्थमेटिक से शुरुआत करते हैं. कहां प्रॉब्लम आ रही है? मिक्सचर्स एलिगेशंस में प्रॉब्लम आ रही है या टाइम स्पीड डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है. तो टेक वन टॉपिक एट अ टाइम एंड उस पे 2-3 दिन लगाओ. और वो टॉपिक, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से स्ट्रांग हो जाएगा, बट ठीक है, थोड़ा बहुत तो कंट्रोल आ ही जाएगा उस टॉपिक में. ठीक है. सो स्टार्ट विद दिस. अगर स्टार्ट नहीं करोगे तो यार गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी. ठीक है ना. So I'm suffering in VRC but in QA fantastic, very good उदित. So उदित सेम वही एडवाइस दूंगा मैं. जो भी एरिया है, जिस भी एरिया में आप लोग सफर कर रहे हो, जिस भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, हाँ, तो उस एरिया के टॉपिक्स एक पेज पे नोट डाउन कर लो. ठीक है. एंड एवरी 2 days, एवरी 3 days एक एक टॉपिक को पिक करो. Get into the concepts of those areas, get into solving the questions of those areas. उनका लाइव लेक्चर देखो. ठीक है. अगर आपने कोई ना कोई बैच ज्वाइन किया हुआ है, मास्टर क्वेस्ट या फिर प्रो बैच, कुछ भी ज्वाइन किया हुआ है, जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट फ्रॉम देयर. सर व्हाट शुड आई एम, सर व्हाट शुड माय एम इन मोस्ट मॉक्स बी फॉर एनपैट? अरे एनपैट पे यार देखो, अभी एम होना चाहिए कि जो भी आप स्कोर कर रहे हो ना, हर मॉक के साथ साथ उसका 10 to 15% स्कोर इंक्रीज होना चाहिए. ठीक है. चलिए, सो फ्रेंड्स लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर. आज का लेक्चर बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प लेक्चर है एंड वी विल बी लुकिंग एट वन ऑफ द डेटा सेट्स फॉर टेबल्स. इफ यू ऑल रिमेंबर, अच्छा याद नहीं भी होगा तो मैं याद दिला देता हूं. नवंबर में हमने एक सीरीज रन की थी जिसमें मैंने 3 लेक्चर्स लिए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के. ओके. एंड इन दैट सीरीज आई कवर्ड द वेरी बेसिक्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन. सो परसेंटेज की जो कैलकुलेशंस हैं हमने उसके बारे में डिस्कस किया था. सो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने वो वाली सीरीज अटेंड नहीं की थी, यूट्यूब पे मिल जाएंगे वो वाले लेक्चर्स. ठीक है.
सो इट्स ऑलरेडी लाइक 1.5 मंथ बैक पुरानी बात है, 2 महीने पुरानी बात है. सो यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड वहां पे 3 लेक्चर्स हुए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के. उसके बाद हमने रीजनिंग की सीरीज रन की थी एंड नाउ हियर आई एम बैक अगेन with some more questions on data interpretation, right? अब data interpretation एक ऐसी चीज है जिसमें आपको ना थोड़ा सा रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी, राइट? ऐसा नहीं है कि आप 1 महीना पहले डेटा इंटरप्रिटेशन स्टडी कर चुके हो और अब क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे. हाँ, क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएंगे, बट वो जो स्पीड चाहिए होती है ना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो वाली स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है. अब रेगुलर प्रैक्टिस का ये मतलब नहीं है कि भाई रोज रोज डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट सॉल्व करना शुरू कर दो. हाँ, हर 3-4 दिन में थोड़ा बहुत स्टडी कर लो, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो. दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू बीइंग इन कॉन्टिन्यूटी विद दीज टाइप ऑफ एरियाज. ठीक है, चलो. तो आज हम एक कंप्लीट सेट सॉल्व करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का, इन विच द डेटा विल बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. नाउ ये जो टेबल्स की फॉर्म में डेटा गिवन होता है, दिस इज द मोस्ट बेसिक वे ऑफ गिविंग यू द डेटा. ठीक है, अब बेसिक तो होता है, डेटा हम इजीली रीड कर पाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम इज वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको टैकल करने में बहुत दिक्कत आती है. ठीक है, तो आज हम एक कंप्लीट डेटा सेट करेंगे टेबल्स के बेसिस पे. ओके, एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू स्कोर 100% in the questions that we are going to cover in today's lecture. ठीक है, so how many of you have confidence? चलो मैं एक चीज बता देता हूं, आज का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना वो मॉडरेट है, इट्स स्लाइटली बिलो मॉडरेट. ओके, so how many of you are confident that you will be able to score 100% in today's lecture? Come on, how many of you are confident? Come on people, show some confidence. क्या हुआ, बत्ती गुल हो गई जैसी मैंने पूछा 100% कौन कौन स्कोर कर पाएगा? संकेत यस नहीं लिखना, मैं पूछ रहा हूं हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू स्कोर, और यू आर कॉन्फिडेंट. चलो थोड़ा बहुत 80% कॉन्फिडेंट है. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू स्कोर 100%, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे. ऑल राइट, सो वी हैव सम पीपल. ओके ग्रेट, चलो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्प्ले द डेटा. ठीक है, डेटा डेफिनेटली विल बी गिवन द फॉर्म ऑफ टेबल. अब उस डेटा को एनालाइज करना मैं 2-3 मिनट दूंगा. जब तक क्वेश्चंस डिस्प्ले नहीं होंगे तब तक आप डेटा पे वर्क करना शुरू नहीं कर सकते. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू 2 minutes एंड ट्राई एंड हैव अ लुक एट द डेटा. एनालाइज करो डेटा को, एंड इफ यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग आउट सम वैल्यूज टू सेव योर टाइम, go ahead, do that. Okay, so the data related to the first 5 questions, the 5 questions for this complete data set is on your screen. So read each and every row and each and every column of this table carefully. Post done in the chat box. There is no need to note down the data of the table. Note down करने की जरूरत नहीं है, because this table will be given with each and every question separately. Okay, so have a look at this and let's see. काफी सारे students ने claim कर दिया है that they will be able to score 100%. Asha says 10,000. Very good. Pradeep, good. Vishakha, nice. AI एक्सप्रेस, ओहो एयर इंडिया एक्सप्रेस, यहां पे एयर इंडिया भी उड़ रही है. एंड संस्कार, गुड, वेरी गुड. Now please post done in the chat box once you are done analyzing this data and you want me to take you to the questions. आज के क्वेश्चंस के लिए मैं टाइम लिमिट एज सच नहीं रखूंगा, so you will have 2 minutes, 3 minutes every question and you can take your time.
All right, done. Good. A few more seconds I'm giving you to analyze this data. यहां पे क्या है? 1 2 3 4 5. I'll call them A, B, C, D, E. There are 5 students and their marks are given. So ऊपर यहां पे लिखा हुआ है the following table represents the marks obtained by 5 students out of 100. ये दिमाग में रखना, ठीक है? So these scores are out of 100 in every subject, ठीक है? In 5 different subjects. So 5 students हैं, 5 subjects, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस एंड हिस्ट्री, एंड यहां पे ना एवरेज दिया हुआ है. सो वन कॉलम is dedicated to the average of the marks of each student in the 5 subjects. Okay, chaliye. So question number 1 I'm going to display. Let's see how many of you will be able to give me a correct answer for the first question, and table will be there at the bottom of the screen. Okay, so question number 1, no rush, आराम से, टाइम लो, मेक श्योर दैट यू आर गिविंग मी अ करेक्ट आंसर. मुझे क्विक आंसर नहीं चाहिए, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए, ठीक है? Yes, Hunter Gaming, 3 months are enough for completing the syllabus. It totally depends कि बेटा कितना टाइम आप डिवोट करते हो, how much time you devote on daily basis. But yes, previously, like in so many years, I have taught a lot of students who starting in January or even February में स्टार्ट करके भी उन्होंने कंप्लीट किया है सिलेबस एंड उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है? सो ये पॉसिबल तो है. So let's look at very first question. It says, if the ratio of marks obtained by Daman in Hindi and history was 3:4, then what was the ratio of marks obtained by Daman in history and marks obtained by Chaman in history? So you may write your option. You may write your answer as option A, B, C, or D. Okay. So musical man is the first one to give the answer, and then one more student. I've got answers from 2 students. Good, very good. All right, people. So around 6 students have given the answers, 7 students have given the answers, and all of you have given the same answer. चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. लेट्स सी इफ ऑल ऑफ यू आर करेक्ट और ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग. देखते हैं. So marks obtained by Daman in Hindi and history. So Daman in Hindi missing है ये number, and Daman in history is also missing. Now they are talking about Daman, and out of 5 subjects, the marks in 2 subjects are missing, but the average of Daman is given. Okay. Now average क्या होता है? Sum divided by number of terms. So I can say that sum of the scores will be equal to average multiplied by number of terms. Okay. अब यहां पे average given है 67 and number of terms is number of subjects, that is 5. So can you tell me what will be the sum of the scores for Daman? Daman का sum कितना आएगा? जल्दी से लिख दो value. I'm sure all of you must have calculated. तो Daman का sum कितना आएगा in all the 5 subjects? It is 67 multiplied by 5. That is, come on. All right, 335. Absolutely.
So 335 is the sum of the scores of Daman in all the 5 subjects. अब 5 में से 3 सब्जेक्ट का स्कोर दिया हुआ है, ओके, 80, 80 and 70. So 335 minus 80 minus 80 minus 70. How much will be left for Hindi and history? Again, please write this number. So how much will be left for history and Hindi? So 335 में से कितना माइनस करना है? 335 minus 80 and 80, 160, 160 and 70, 230. So 230 subtract हो जाएगा. So leftover score कितना बचेगा? 105. Let me see how many of you have written 105. Absolutely correct. So 105 will be the sum of the scores of Daman in history and Hindi. Okay. Now Hindi and history, ये दो subjects का ratio दिया हुआ है 3:4. Okay. So I can assume these scores as 3x and 4x respectively. Okay. So we can say that Hindi is 3x and history is 4x. And their sum should be equal to 105. 105. So can you please get me the scores in Hindi and history respectively? Hindi और history के अलग अलग scores बताओगे? तो यहां से 7x 105 आ जाएगा and x का value आ जाएगा 1515. Okay. Now I'll substitute the value of x here in 3x and 4x. We'll be able to get the individual scores in Hindi and history. So हिंदी में मार्क्स हो जाएंगे 45 and history में मार्क्स हो जाएंगे 60. So 45 and 60 are the respective marks of this person in Hindi and history respectively. All right. Now this is what I've got. Now what do we need? We need the ratio of marks obtained by Daman in history. Now Daman के history में कितने marks है? 60. So this number is 60. And the marks obtained by Chaman in history. Now Chaman in history is 72. So 60 is to 72. That is 12 cancel out कर देंगे यहाँ से, 12 common ले लेंगे. तो 5 is to 6. So 5 is to 6 will be the final answer of this question. And that is option D. And each and every one of you was correct. So +1 for every student. Good. +1 for every student. Now let's move on quickly and look at the second question. Now it is very important to understand कि first question में जो भी values हमने calculate की हैं, okay, whatever data was given in question number 1 cannot be used in the second question. ठीक है, until and unless it is mentioned. Okay, तो किसी भी question में कुछ data given है, आप next question में use नहीं कर सकते जब तक आपको बोला नहीं हुआ. वेरी गुड हंटर. सो हंटर नो प्रॉब्लम. अब जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है ना, ट्राई करो कि फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू जो भी लर्निंग हुई है आपको वो इस सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई करने की कोशिश करो. ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है, आराम से सॉल्व हो सकता है. All right, so we have got answer from one student. That's wonderful.
All right, people, only one student with the answer up till now, and वो भी delete कर दिया. आशा क्या कर रहे हो बच्चे? Okay, so now other students have started giving the answer. So Sanket is up with the answer, Asha, AI Express, and Kishan. So answer from 4 students. And once again, all of you are with the same answer. Okay. Write your answer only once. एक बार लिखो अपना आंसर, बार बार रिपीट मत करो. Okay. अब यहाँ पे किन किन की बात की गई है? They are talking about Aman and they are talking about Chaman. Okay. So चमन का एवरेज गिवन है, अमन का भी एवरेज गिवन है. सो कैन यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल द सम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ अमन एंड चमन रिस्पेक्टिवली. तो मेरे को अमन का सम चाहिए एंड चमन का सम चाहिए. ए एंड सी, देयर आर टू कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, so I need the sum of the scores of these two people. Come on. For Aman, what is the sum? And for Chaman, what is the sum? Please write both the numbers. So here it is 56. 56 multiplied by 5. I believe it is 280. So 280 for Aman is the sum. Absolutely. And what about Chaman? Chaman is 65.4. 65.4. So 327. 327. Absolutely. So 327 is the sum for Chaman. So 280 and 327, right? Now looking at Chaman, Chaman ke 4 scores given hai. These 4, okay? And we require the marks of Chaman in maths. So marks of Chaman in maths, what will be this number? So marks of Chaman in maths kitna hoga? So 60 and 60, 120, 120 and 140, 260, 267. 267 minus कर देंगे 327. So it will be 327 minus 267. I believe it will come out to be 60. Absolutely correct. Okay. So Sanket has given the answer as 60. तो चमन के मैथ्स में मार्क्स हो गए 60. Done. अब क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमन इन इंग्लिश, अमन इन इंग्लिश एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चमन इन मैथ्स, चमन इन मैथ्स, इसका रेशियो कितना है? 5:4. ओके. आई एम नॉट श्योर अबाउट द फर्स्ट वैल्यू. अमन के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं मुझे नहीं पता, बट चमन के मैथ्स में मार्क्स मुझे पता है 60 है. So from here I can say that Aman's marks in English can be calculated using this ratio. Okay, so 4 and 60 cancel out हो जाएगा. 15, 15 into 5 is 75. So Aman's marks in English comes out to be 75. Okay, so ये सही है, correct है, yes or no? Are you able to reach up till this part? I'm sure. Now we have to find the marks obtained by Aman in history. Now Aman in history. So अमन का टोटल पता है 280, हिंदी के मार्क्स 65, इंग्लिश नाउ वी हैव कैलकुलेटेड 75, 50 एंड 40. इन सबको ऐड कर लेते हैं एंड यहां से 280 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, विल गेट द आंसर. So 60 and 75, 140, 140 and 90, 230. So Aman's marks in history should be 280 minus 230 and that will come out to be 50. So 50 is the correct answer for our question. Okay. So option C, 50. So those who have given the answer as 50 plus 1 for all of you. Okay. All right. Let's move on and look at the third question. Slightly lengthy. It says if the marks obtained by Bimal in Hindi is 20 more than marks obtained by Daman in history.
And the ratio of marks obtained by Biman and Daman in Hindi is 16:9. Then find the average marks obtained by Biman. So Biman का हिंदी में marks चाहिए, हिंदी का score चाहिए, and will be able to get the average of Biman which is required in this question. Okay. Divyansh, you are in class 12th, you have your board exams, so finish up with the board exams. And what you can do is you can start first of all watching the YouTube lectures and understand what is the curriculum, what is the syllabus for IPMAT. Okay? So it will take you 15-20 days to get familiar with the syllabus of IPMAT. And then what you can do is you can join any of our batches. Okay? So जो भी batches available हैं उनको join कर सकते हो, and these batches are going to help you a lot. मृत्युंजय प्लीज रिक्वेस्ट है यार, अपना आंसर एक बार लिखो. इफ यू हैव द आंसर जस्ट राइट इट वंस, डोंट रिपीट योर आंसर, डोंट स्पैम द चैट बॉक्स. Okay, most of you are getting answer as option A. Only one student, Mrityunjay, has given option D as the answer. So AI Express, Musical Man, Kishan, and Ishita. Four students up till now. They are saying that option A is the correct answer. And some more, Sanket. Pradeep, you're asking, is it possible to get numbers of women? Check करते हैं यार, check करते हैं. Okay, let's do it. So question बोल रहा है, if the marks obtained by women in Hindi, now women in Hindi, so women का हिंदी का score पता नहीं है, is 20 more than marks obtained by Daman in history. Now Daman in history ये भी पता नहीं है, ठीक है? If the marks obtained by women in Hindi is 20 more than marks obtained by Daman in history, both these are unknown, but the difference between them is 20. And the ratio of marks obtained by Biman and Daman in Hindi. So ratio of marks obtained by Biman and Daman in Hindi. So Biman in Hindi and Daman in Hindi, इनका रेशियो 16:9 ये बोला हुआ है. ठीक है? So let's write each and every marks. So first of all, Biman and Daman in Hindi, I'll assume them as 16x and 9x. Okay? So I'm assuming this as 16x and this as 9x. Done? ठीक है? अब फर्स्ट लाइन पे जाते हैं. मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बिमन इन हिंदी. सो बिमन इन हिंदी 16x ऑलरेडी हमने कंसिडर किया हुआ है, इज 20 मोर देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दमन इन हिस्ट्री. दमन इन हिस्ट्री से ये 20 ज्यादा है. सो आई कैन से दैट दमन इन हिस्ट्री विल बिकम 16x minus 20. ओके, आई रिपीट. सो दमन एंड बिमन इनका रेशियो गिवन है 16x and 9x, अज्यूम कर लिया. Because this is 16x, this will become 16x minus 20. Done? ये 20 कम है उससे. हो गया? अब टास्क क्या है? I'll have to find out the value of x. अब value of x कैसे निकाल सकते हैं? दमन को यूज करके. दमन का टोटल स्कोर. तो दमन का टोटल स्कोर कितना होगा? 67 multiplied by 5, that is 335. So I'm talking about the total score of Daman. That is 335, and that will be equal to the sum of these marks. So let's check what is the sum of these marks. 9x, 80, 80, 70 and 16x minus 20.
तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं, 80 plus 80 is 160, 160 and 70 is 230, minus 20, 210, and then 9x and 16x is 25x. So this is the equation that I've got. Upon simplification of this equation, I'll get 25x is equal to 125, and the value of x comes out to be 5. So x का value 5 आ गया. Are we all getting this? Right? ठीक है? एक second. Hunter says 16x plus 20. Hunter एक बार check करते हैं. If the marks obtained by Biman in Hindi is 20 more than marks obtained by Daman in history. So ये ज्यादा है, ये कम है. ठीक है? So कम है तो 16x minus 20 होगा ना? It will not be 16x plus 20. All right? ठीक है? All right, Hunter. No problem. ठीक है? सही है, समझ में आ गया. सो x का वैल्यू आ गया 25. सो बिमन के हिंदी का स्कोर यहां पे 16 into 5, 16 into 5, that is 80. So I've got बिमन का हिंदी का स्कोर. Now you have all the marks of बिमन. बिमन के सारे मार्क्स हैं आपके पास. Now you have the sum, you have all the marks individually. तो आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है? तो एवरेज विल बी सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो इनको ऐड कर लेते हैं. So can you all give me the sum total of Biman? Biman का total बता दो. Meanwhile I'm calculating. So 80, 150, 220, 280, 340, 350. So I'm getting it as 350. Am I correct? मैंने कुछ गलती की है? मेरे को लग रहा है गलती की है. 352 होना चाहिए. Right? So 352. All right. So यहां पे आ जाएगा 70.4 will be the average. 352 divided by 5, that is 70.4. Option A is the correct answer. So the students who have given option A as the answer, they are absolutely correct. Okay. Now people, एक चीज आपने realize किया, जो last series थी जिसमें मैंने DI के questions कराए थे, in that series, in most of the sets, we have seen the application of percentages. Now we are looking at the application of ratios and averages. Okay, so we are preparing you for each and everything. Let's move on and look at question number 4. Very easy question, बहुत easily हो जाना चाहिए. Mrityunjay, you're saying, sir, I'm in class 11th in IPMAT Pro batch and completed the syllabus except some backlogs. What should be my strategy for class 12th? Okay, so you are in 11th. All right. So, Mrityunjay, good that you have already completed the syllabus. I'm very impressed with you. Okay. Now, what you should do is you have some backlogs. So, first of all, your agenda should be to finish your backlogs, whatever backlogs you have. Okay. Then, once you are in 12th standard, तो 12th standard पे ज़्यादा focus करना, because board के exams बहुत ज़्यादा important होते हैं. Board exams का score आगे तक हर जगह पे count होता है. ठीक है? So board exams पे ज़्यादा focus करना. Now since you have already completed the syllabus for IPMAT, so start finding out your weak areas. एक एक करके weak areas को determine करो and उन पे work करते रहना. That will be perfect. Okay? All right. चलिए start करते हैं. Marks obtained by Isha in English. Isha in English पता नहीं है. Is 10 marks more than marks obtained by Daman in Maths. Daman in Maths कितना है? 80. So Isha in English will be 10 marks more than that, which is 90. Isha का sum calculate कर लेते हैं. 90 and 90, 180, 250, 330, 400, 410. So 410 is the sum, which when divided by 5, it should come out to be 80. Sorry, it should come out to be 82. All right.
So 82 will be the answer of this question, which is option A. That one was easy in front of the first three questions, right? चलिए, so question number 4 done. +1 जिसने भी option A दिया है, ठीक है? Now let's look at the last question. The last question seems a small question, ठीक है? If the marks obtained by Daman in Hindi and history 3:4. अब ये सेम चीज हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, तो वहां से डेटा सेम है, तो इसीलिए आप वैल्यू यूज कर सकते हो. Okay, so Payal says option A is the answer, and AI Express option D, Musical Man option D. All right, so all of you are saying option D is the correct answer. Let's check this one. Let's verify if the correct answer is option D, that is 65. Now, if the ratio of marks obtained by Daman in Hindi and history is 3:4, ये वाले दो scores का ratio 3:4 है. Now, the same thing we have used in the first question. तो एक बार let's get back to the first question. So first question में भी यही same statement था, and we got the scores as 45 and 60. ठीक है? So preserve the rough work and use it in this question. So दमन का यहां पे स्कोर आ जाएगा 45. दमन इन हिंदी. Also हिंदी में बिमन के मार्क्स गिवन है कितना? 80. 80 is the score of बिमन in Hindi. And they are asking you the average of these 5 students in Hindi. हिंदी का एवरेज चाहिए. So हिंदी का एवरेज चाहिए, तो हिंदी का सम कैलकुलेट करते हैं. 60 and 80, 140, 200, 240, 310, 320, 325. So 325 divided by 5, that is 65. So 65 will be the average of all the 5 of them in Hindi, and the correct answer is option D. Okay, right? So sir, option A was for previous. Okay, Payal, I'm sorry. So I thought option A आपने इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर किया है. My bad. ठीक है. So yes, 65 is the answer of this question. Absolutely correct. So जल्दी से बता दो your score out of 5. So we have done 5 questions. So what is the score of each and every student? जल्दी से अपना score बता दो out of 5. How much you have scored? How many correct? How many wrong? Sanket says 5 on 5. Asha also 5. Nice. AI Express 5. And Shriman 4. Shriman, identify the error. कहां पे error किया था आपने? ठीक है? And then rectify that error. Ishita 4 on 5. Good, Ishita. Keep it up. Musical Man, wonderful, lovely. 5 on 5. So correct 3, 0 wrong. Okay, Kishan. So Kishan 3 correct, 0 wrong. That means 2 unattempted. No problem at all.
Perfect, great. So friends, that's all from my side. I hope आज के लेक्चर में मजा आया होगा and all of you were involved in the questions. तू ही बना मुझे तो फिर फर्स्ट क्लास देख देख कर सीखा. All right, Hunter, no problem. So friends, yes, the most important point here is all of you have got 5 on 5 today. ठीक है? अब 5 on 5 के लिए let's say for every question on an average we have done 5 questions. So let's say on an average you were taking 1.5 to 2 minutes, okay, or whatever time you were taking. अब slowly and gradually अपना practice increase करो, ठीक है? जहां पे भी calculations में आप अटक रहे हो, you are not able to do the oral calculations, right? अपने आप नहीं कर पा रहे हो, आपको लिख के करने की जरूरत पड़ रही है, so उन areas को improve करो and make sure that ये जो average time taken है ना, ये धीरे धीरे कम होता रहे, okay? ओवरनाइट 10-15 दिन में ये इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ही इंप्रूवमेंट आएगी, ओके? सो ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में और मजेदार क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे सॉल्व. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन सच कैलकुलेशंस. ऑल द बेस्ट.